everyone, this is Mousumi and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I will be sharing this nude everyday makeup look with foxy eyes. So if you do like that makeup look, please keep on watching. সো অ্যাজ অলওয়েজ স্কিন প্রেপ করে আমি বসে পড়েছি ক্যামেরার সামনে। এবার আমি আমার মেকআপ করা স্টার্ট করবো অ্যান্ড ফর দ্যাট আই উইল বি অ্যাপ্লাইং দ্য প্রাইমার ফার্স্ট অ্যান্ড অ্যাজ আই হ্যাভ oily skin, so I usually use the primer which mattifies the skin and also minimizes the pores. So yeah, and the primer application according to your skin type is very important to make your best long lasting. So while applying the primer, one thing came into my mind. Everyday makeup सीखना हम लोग सभी चाहते हैं, but we need to take care of our body every day also, which we ignore sometimes because of our hectic schedule. But body care steps are very simple. See, self-love and self-pampering is very important. Facial skin का तो हम ख्याल रखते ही है, but we neglect our body most of the time, which we shouldn't do. So what I do to pamper my body? I choose this Body Cupid Beautiful Rose shower gel for cleansing my body. Take a little bit of shower gel on your loofah and then start cleansing your body. Its seductive rosy fragrance creates a majestic spa-like feel. Rose essential oil, aloe extract, vitamin B5 and E present in that shower gel soothe and moisturize your skin so well. After washing your body, apply this Body Cupid body lotion which is enriched with aloe vera and green tea. Apply the lotion on your damp body for better absorption. It gives a buttery-like smooth skin instantly and also it smells so nice. You will get a relaxed vibe instantly. And once you are done with your shower, don't forget to apply a body mist before going out. This Body Cupid body mist, which has cucumber and melon in it, stays all through the day and gives a refreshing fragrance for a longer period of time. Spray the mist directly on your skin, focusing the nerve points, and apply it as many times as required. So isn't it feel good to take care of your body? If not every day, at least twice a week, you should take care of your body, guys. And now I will be using the foundation which is lightweight and gives medium coverage, because for everyday makeup look, I think a lightweight wala foundation will be apt if you want the happiness for your skin, and also it stays for a longer period of time as well. Also, I prefer to blend my foundation with the beauty blender, especially when I have to be in that makeup for a long time. Excess products absorbed हो जाता है and वो जो light एक layer होता है ना skin पर, वो long lasting and देखने में भी अच्छा लगता है in person, and sweating का भी problem नहीं होता है. So I prefer the beauty blender rather than the brush. And today I won't be using any concealer, so I have applied the foundation around the eyes as well to cover up my dark circles. See, without blush I can't go out. अगर आप comfortable नहीं हो then you can totally skip the blush part. तो मैंने एक cream blush लगा ली है अपनी cheek पर to get a refreshed and vibrant look. And थोड़ा सा nose पर भी. And now I will be using one of the best products for an everyday makeup is this compact powder from Kiro Beauty. With Kiro, you will get skincare and makeup as one, as the formulas are created with skin active ingredients that perform and benefit your skin as well. एंड अगर आपको चिंता है अपनी स्किन को लेकर, इफ़ यू डू मेकअप ऑन एन एवरीडे बेसिस, कीरो के साथ आपको वो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कीरो का कॉम्पैक्ट पाउडर आपको गुड कवरेज भी देता है, वाटरप्रूफ भी है एंड नॉन ट्रांसफरेबल भी है. सो इट्स बेस्ट फॉर दिस मॉनसून सीजन. अब मैं कीरो का ही ब्लश यूज़ करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक माई बेस वाटरप्रूफ एंड लाइट वेट बेस ह्यूमिड वेदर के लिए अच्छा होता है, एंड मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करना भी बेस्ट ऑप्शन है. सो दैट इज वाई आई हैवंट यूज्ड एनी कंसीलर और कंटूर पाउडर टुडे, जस्ट द फाउंडेशन एंड द ब्लश एंड दैट्स इट. एंड आप लोगों के लिए मैंने ब्लश एंड कॉम्पैक्ट पाउडर का शेयर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं. And now I will be applying the highlighter on the highest points of my face, and that step is optional. आप follow भी कर सकते हो, skip भी कर सकते हो ये step को.
वो एक इंस्टेंट ग्लो के लिए मैंने ये हाइलाइटर यूज़ किया है। And now I will be applying the setting spray all over my face to make my base long lasting, and the setting spray is as important as the primer. एंड आई ब्राउ को ऑफ कैमरा फिलअप करके आई विल बी स्टार्टिंग माई आई मेकअप। एंड आई मेकअप के लिए मैंने एक ब्राउन आई शेडो लिया है एंड हल्के हाथों से पहले उसको क्रीज लाइन पे डिपॉजिट किया एंड देन ग्रेजुअली ब्लेंड करना शुरू किया। आई ब्राउ बोन तक उसको ड्रैग किया एंड धीरे धीरे से मैंने वो कलर को बिल्डअप किया एंड क्रीज लाइन को थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिफाई किया टू मेक द आईज लुक इनहैंस्ड। And for the lower eyelid, I have used the same brown eyeshadow and just blended it. And inner corner and eyelid पे एक skin color का eyeshadow apply किया है just to make my eyes look bigger and intensified. एंड आईलाइनर के लिए मैंने लिया है माई रिसेंट एंड द मोस्ट फेवरेट आईलाइनर पेन फ्रॉम Kiro Beauty, and to create a foxy effect I have applied a thin wing at the outer corner first and then created a small wing at the inner corner and then एक thin eyeliner draw किया है अपनी eyelid पर। तो फॉक्सी आईलाइनर ड्रॉ हो चुका है। नाउ आई विल बी अप्लाइंग द मस्कारा एंड फॉर दैट ऑल्सो आई हैव चोजन दैट Kiro ब्यूटी का मस्कारा बिकॉज आई मेकअप के लिए भी आपको वो वाटर प्रूफ होना चाहिए प्रोडक्ट, सो दैट इज़ वाई आई हैव लाइक टेकन दैट मस्कारा एंड द आईलाइनर टू मेक माई आई मेकअप वाटर प्रूफ। फॉर एन एवरीडे मेकअप लुक यू कैन अप्लाई अ डीप कलर का लिपस्टिक बट आई लव न्यूड कलर, सो दैट इज़ वाई आई हैव अप्लाइड अ न्यूड लिपस्टिक्स ऑन माई लिप्स। So that is the final look, guys. I hope you guys have enjoyed that makeup look and my Hindi also, isn't it? Do let me know that in the comment section. And if you loved that video, don't forget to like and share this video. नए लोग please subscribe भी कर देना and see you guys in my next video. Till then, take care, bye bye.